कोई भी जो है वो इलेक्शन को एक भी दिन आगे नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन एक भी दिन आगे हुआ तो उसके नतायज भी संगीन होंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जब 8 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो इसको पत्थर पर लकीर समझा जाए जो कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। तो इसलिए आज ही ये तवक्को है कि आज ही फैसला होगा, क्योंकि कल इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है। कल आखिरी दिन है, 16 दिसंबर तक अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर 8 फरवरी को इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं रहेगा। जी ठीक है मानद गुशकोरी, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दिए हमें। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने जो पिटीशन है वो दायर कर दी है। इसी पर अब बात करते हैं। उस्मान खान भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, किस मुकाम पर आप इस वक्त हैं और आपके पास क्या मालूमात है अब तक की सारे सूरत हाल को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर ही मौजूद हूँ और इलेक्शन कमीशन का जो कानूनी अमला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, जबकि उनकी लीगल टीम के कुछ मेंबरान और जो ज़रूरी अमला है वो इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, क्योंकि ये अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि 54 रोज़ कबल इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी करना होता है, जिसका आज रात 12 बजे तक जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम के पास वक्त है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने आज जो है वो इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से जो है वो जारी करना था, मगर जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और इस्लामाबाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल करवाया, जिसके बाद इंतखाबी अमल जो है वो एक बार फिर सुस्त रवि का शिकार हो चुका था, और जिस पर आज ये एक अहम मुलाकात भी हुई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा है उनसे मुलाकात हुई थी। अटॉर्नी जनरल भी इसमें मौजूद थे और मुशावरत भी हुई है इंतखाबात के हवाले से, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो हुकाम है वो वापस पहुँचे और उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उनके साथ मुशावरत की और एक पटिशन तैयार की और उस पटिशन में ये दरख्वास्त की थी कि मुअज़्ज़ज़ जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात जो है वो करवाए जा रहे थे और 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया था, और उसी अमल पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला था वो अमल पैरा था और अपने इंतखाबात की तैयारियां तेज़ी से कर रहा था। हल्का बंदियों का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका था और जो अहम मरहला था कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है, रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान, उनकी तकर्री भी कर दी गई थी और उनकी जो ट्रेनिंग है वो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स में थी, जबकि ट्रेनिंग के ही रोज़ जो है वो लाहौर में पटिशन दायर हुई थी और उस पटिशन के बाद इस अमल को जो है वो सस्पेंड किया गया था नोटिफिकेशन को, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का जो अमल था उस हवाले से भी चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला कर दिया था कि इनकी ट्रेनिंग्स को रोक दिया जाए, जिसके बाद आज ये मुशावरत हुई है और इलेक्शन कमीशन ने फिर एक अपील तैयार की जो कि पटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर दी गई है और बताया भी यही जा रहा है कि आज ही इस पर जो है वो समाअत जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है कि आज ही इस पर समाअत हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आइन के मुताबिक जो है वो 54 रोज़ कबल इंतखाबात का शेड्यूल देना होता है, जिसका आज आखिरी रोज़ है रात 12 बजे तक, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो कल इसका मज़ीद जो है वो शेड्यूल देने से मुतल्लिक वक्त नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि उनकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल थी आइंदा आम इंतखाबात के लिए। जिस तरह ही लाहौर से ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है उसके बाद इंतखाबी अमल जो है वो एक बार फिर जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ था। तो इस वक्त जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिस पर आज ही तवक्को की जा रही है कि उसकी पर समाअत होगी, जिसके बाद ही फैसला जो है वो मुतवक्के है कि आया मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जो उन्होंने नोटिफिकेशन का लदम करार दिया था उसको मुअत्तल करती है या फिर क्या हिकमत अमली होगी ये तो पता चलेगा, मगर इलेक्शन कमीशन का अमला मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो अपनी जो कानूनी टीम है, डीजी लॉ और जो दीगर उनके वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन जो है वो दायर कर दी है। जी अच्छा, ठीक है, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, बताते चले आपको कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा और सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो जो पिटिशन दायर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए उस पर एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में। अवैस क्यानी हमारे नुमाइंदे भी साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात लेते बात करते हैं। अवैस, आगाह कीजिए। जो पूरी जो पाकिस्तान की जो सियासी और बिलखसूस उनका जो तमाम जो नज़रें हैं, आवाम की जो नज़रें हैं, इलेक्शन कमीशन की जो नज़रें हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के हवाले से जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये ईंट जो है लकीर कहा था इसको और उसी सिलसिले में जो है हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कल वो बैरून मुल्क भी रवाना हो रहे हैं। उसी से पहले आज की जो डेवलपमेंट है शुरू से लेकर और अब
अब तक की जो पेशरफ्त है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो पूरी टीम है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इस वक्त हमारी उनसे जो है कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर जो है मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल जो हैं उनसे, जो कि चैम्बर की तरफ से जो है वो आ रहे थे, जजेस चैम्बर की तरफ से, उनसे भी 24 न्यूज़ का इंटरेक्शन हुआ। और उनसे जब हमारी एक मुख्तसर से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना है कि 8 फरवरी का ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर जो है वो मौजूद है, और जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से जो अपील जो अभी आई है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम देती है ये अभी हम देखते हैं। और यही बात करते हुए वो है कमरा अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में चले गए हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर पे मुश्तमिल जो है ये बेंच तश्कील दिया गया है, जो कि ज़रा में बता रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद ही जो है वो अहम समात जो है वो शुरू होने लगी है। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनकी जो लीगल टीम जो है कमरा रूम अदालत नंबर 1 के बाहर मौजूद थी, हमारी उनसे जो है गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतियात से काम ले रहे थे और कोई भी कमेंट करने, क्योंकि जो इलेक्शन शेड्यूल है उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि वो कब तक आएगा, क्या उसने आज आना था, कल आएगा। उस पर जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो उन टाइट लिप्स हैं। उसके साथ जो उनकी जो लीगल टीम है वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं। जो अपील उन्होंने जो तैयार की है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, जो उसको जो चैलेंज किया है, उस पर भी उन्होंने जो है वो काफ़ी पुरअतमाद हैं। और जो हमारी जो उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है उनका यही कहना है कि पूरा इलेक्शन कमीशन जो है उसकी नज़रें जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। और जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजा की खुद भी आज एक अहम तरीन जो है मुलाकात हुई है, तो क्या 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, उस हवाले से सवालात चूँकि पैदा हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान की हैं उनकी तरफ से जो इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, मुख्तलिफ जो फ्रीक बनने की बात की जा रही है और तमाम जो बातें हो रही हैं, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव साइन है कि तमाम जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो जो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी भी नज़रें इसी पे ही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक जो दरख्वास्त पर जो चीज़ हुई, जो DROs के हवाले से, जो कि अफसरान के हवाले से जुडिशरी को उसमें जो है इन्वॉल्व करने के हवाले से जो बातें थी, उससे एक बहुत बड़ा जो है एक फुकदान पैदा हुआ है, सवालात ने जन्म लिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ही जो कि 8 फरवरी का जो इंतखाबात के हवाले से जो अहम तरीन फैसला दिया था, क्योंकि ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी पावर कॉरिडोर्स में कि काजी फाइज ईसा साहब ने स्टाम्प नहीं लिखवाया, बाकी उन्होंने हर चीज़ जो है वो तय करवाई है, प्रेसिडेंसी से लेके इलेक्शन कमीशन से जो कि इनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद तमाम तरह की 8 फरवरी के जो डेट आई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जो बेंच के हवाले से जो फैसला आया, उसके बाद से जो चीज़ें जो सामने आई हैं, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा ने आकर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को यह बताया कि किस तरह इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हो रही थी, ROs DROs की जो ट्रेनिंग जारी थी, और उसमें ये फैसला आना तो यकीनी तौर पर उनको एक जो है धचका था। लेकिन अब जो सबसे अहम जो चीज़, जो खबर जो सामने आ रही है कि इंतखाबात से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो यकीनी तौर पर तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये खबर है कि अब जो जस्टिस काजी फैज ईसा 3 रुकनी बेंच पे जो आज जो अभी कुछ देर बाद जो समात करने जा रहे हैं वो लाइव स्ट्रीम होगी, अवाम वकला को सुनेगी, जजेस को सुनेगी, 8 फरवरी के हवाले से जो है वो बात करेगी। और इस वक्त जो समात जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समात कर रहा है, जो कि अपील जो सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से कि जो अफसरान, जो सरकारी अफसरान हैं, उन जो DROs ROs की बजाय उसको अदलिया पे लाए जाए, उस पर स्टे के जो हवाले से जो बात थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक बहुत ही अहम और बहुत ही जो नाजुक तरीन जो है जगह पे जो है उन्होंने ये खुद टेकअप किया है मामला। और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अपील जो सबमिट हुई थी, उस पर जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है अपने 3 रुकनी जो बेंच पे मुश्तमिल जो है ये अहम तरीन जो है वो केस की समात कर रहा है। और ये बराह रास्त जो है उसमें देखा जा रहा है कि इस इलेक्शन कमीशन के जो लीगल टीम है वो अपना जो है वो इस अपील को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी दरख्वास्त को प्रेजेंट कर रहे हैं। केस आगे रखा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला आया था उसके बाद क्या चीज़ें जो है हर्डल्स आ रही हैं, कैसे जो है इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को जो है इसको मुतासिर है लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला। उस पर जो है एक जो तफसीली तौर पर जो लीगल जो कानूनी नुकात हैं उस पर मुश्तमिल जो है एक अपील जो कि लीगल टीम जो कि इलेक्शन कमीशन की है उनके वो लेके आई है, वो दायर हुई है। और दायर होते ही चूँकि आम इंतखाबात का मामला है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर जो है वो समाअत शुरू कर ली।
जी इंतखाबात से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट पर जो समात है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है और जस्टिस जो सरदार तारिक है और जस्टिस मंसूर जो है काजी फाइज ईसा साहब के हमरा हैं और इस वक्त समात जो है वो शुरू हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो तफसीली तौर पर जो है वो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम तर हकायक रखे जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जजमेंट रखी जाएगी और उसके बाद जो है जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और जो 3 जो जजेस हैं वो 2 जजेस हैं वो जो है अहम फैसला जो है वो देंगे और जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले के जो स्टे के बाद जो इबहम एक क्रिएट हुआ है उस पर एक बहुत ही तारीखी और अहम जजमेंट आने लगी है जो कि यकीनी तौर पर जो 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं उस हवाले से बहुत ही अहम नोयत की और पूरी कौम और पूरे सियासी जमातों की नज़रें जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इस समात पर जो है वो लगी हुई हैं। अच्छा ये बताइएगा अवैस, जिस तरह तवक्को कर रही है इलेक्शन कमीशन की टीम भी कि जो उन्होंने प्ली की है उस पर उनको उनके मुताबिक फ़ैसला मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है, स्टे दिया जाता है उस पर, तो उस सूरत में जो 2 दिन का गैप आया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इलेक्शन 8 फरवरी को उसी तारीख को होंगे, जो ट्रेनिंग और सारे मामलात हैं वो अपने वक्त पर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम आपने नुक्ता जो है वो उठाया है और यही वो पॉइंट्स है जो कि हम गैर रस्मी गुफ्तगू में जो कि लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की वहाँ पर मौजूद थी कोर्ट रूम नंबर, क्योंकि ऊपर से जो है कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर से ही हम जो है वो आ रहे हैं और इस वक्त हमारे जो एक सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं जो कि कोर्ट कवर करते हैं वो कमरे अदालत में ही मौजूद हैं, अमानत गिशकोरी, तो इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो अहमद खान जो उनसे हमारी बात हो रही थी क्योंकि यहाँ से ही वो जब जा रहे थे तो मीडिया साथ ही रहेगा, वह साथ ही रहेगा। and sharing of information. समाज जो है वो बराह रास्त दिखाई जा रही है। Section 50, my lord. It's appointment of district returning officers. For election to an assembly, the commission shall, in the prescribed manner, appoint a district returning officer for each district or a specified area A from amongst its own officers subject to availability. B, by selection from a list of officers. जी B, पहली प्रायोरिटी हमारे अपने ऑफिसर्स की है जी, if available. B, by selection from a list of officers provided by the government. The government has to provide. Provided by the government or a provincial government. Or C, from the subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court. Number 2, subject to the superintendent's direction and control. I'll just skip 2 because it says the DRO will work under the supervision and control of the election commission. I'll take your lordship to section 51. So which provision has been attacked? 51 and 51 ka 1. So who to be appointed? What do they suggest? They say that the appointment should be from the judicial officers. No, but that's not challenging the Viris. They're saying one of the options. आप कह रहे हैं Viris challenge. जी Viris challenge ground पे की और उन्होंने ये ground किया जी कि because Article 218(3) requires free and fair election. Right. Yes. This is what our contention is. कि even the impugned order does not mention even a single ground why there should be a suspension of the ARO's or DRO's notification by referring to a single constitutional provision which section 50 and 51 is ultra wise of. Sorry. My lord. We are a bit tired and just take us step by step. First of all, what's wrong with this provision? If it is removed, what do they want? What does this petitioner want? Let me take your lordship to the prayer. What you're saying is उन्होंने इस सेक्शन को चैलेंज किया है कि 2183 के ग्राउंड पे कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और इस प्रोविजन में कौन सी चीज है जो फेयर इलेक्शंस के रास्ते में आती? They are saying that the appointment from executive will hamper the fairness of the election. वो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं. All times to come. Yes. This is what they have challenged it on. For all times to come. जरा प्रेयर तो ये जुडिशरी से होना चाहिए. Let me take your lordships to the prayer. प्रेयर पढ़िए जरा, उसमें क्लियर हो जाएगा. जरा पढ़ें.
मतलब मुकम्मल कह रहे हैं कि उनको खत्म किया जाए। जी, वो कह रहे हैं कि सेक्शन 50 and 51 is ultra wide. It's at page 25. Please bear with us, because usually we read petitions before we come to court. Ji, my lord. This is a time when we've not read it. I understand. Ji. It's at page 25, my lord. Ji. And the prayer starts at the bottom. Ji. In view of the grounds and facts explicated, it is most respectfully prayed that the instant petition may kindly be allowed and impugned sections 51B and 51(1) of Elections Act 2017 may kindly be declared unconstitutional, void, without lawful authority and of no legal effect. Alternatively, it is prayed that section 51B of the Election Act, to the extent of the expression list of officers provided by the government or a provincial government therein, may kindly be declared unconstitutional, void, without lawful authority and of no legal effect. Further, the Election Commission may kindly be directed to initiate consultation process with the Honorable Chief Justice of the High Courts for the appointment of judicial officers as DROs and returning officers under section 50 and 51 of the Elections Act for the general elections. Moreover, it may kindly be declared that in general elections cannot be conducted in fair, transparent, free and impartial independent manner in presence of DROs and ROs from the executive branch of the state. कभी भी चैलेंज कर सकते थे पहले भी It has been there for the 6 years. जब ROs अपॉइंट हो गए तो उनको सब याद है. We are at the verge of issuing the. ये एक सेकंड, ये लॉ कब बना है? 2017, my lord. Last 6 years. Last elections कब हुए? 2018. On the basis of this section 50 and 51, they were. Last election में जो DROs थे वो judicial officers थे. This was the first time. नहीं, judicial officer तो नहीं थे. जुडिशियल ऑफिसर्स थे जो DROs है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स थे. रिटर्निंग ऑफिसर्स भी जुडिशियल उससे लिए थे. AROs जो है, इट वाज अ मिक्स फ्रॉम. पर ये आप हम पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं. इसमें लिखा है फ्रॉम द जुडिशरी, subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court. So how can somebody impose it? Suppose even you write to the Chief Justice, then it's his discretion whether he wants to spare a judicial officer or officers or not. Yes. In fact, what we did was, we did write to all the 5 honorable Chief Justices of the High Courts, different letters. Are they on record? जी, they are on the record. दिखाएं. कब लिखा आपने बताइए? The first one is the Lahore High Court. It's at page 208. Letter was dated 1st of February 2023, in February, my lord. And there was a clear regret. Where is it? Where is the regret? It's at page 208. There are 2 letters of Lahore High Court. The reply is at page 210 of the paper. You wrote as far back as 1st of February? Yes, my lord. Because the Provincial Assembly of the Punjab was... फिर बताएं, फिर कब? फिर my lord, 210 पे. 210 पे, page 210 पे letter of regret है. जरा पढ़ दें. जी my lord. मैं take your lordship to 211 पे. नहीं, regret में जो reasons दिए हैं, as we speak. जी, there was a shortage of judicial staff and all that. पढ़ लेना. It's para 2. Para 1. जी. Para 2-1. Para 2-1. As we speak, a huge number of cases totaling 13,12,480 are pending adjudication in the courts of district and session judge, additional district and sessions judges, senior civil judges, and civil judges throughout Punjab. And if services of majority of these officers are given as district returning officers and returning officers at the disposal of Election Commission of Pakistan, this pendency will mount to by manifold. And the ultimate sufferers will be the poor litigants, resultantly hampering the entire scheme and system of dispensation of justice at the grassroots level, and this cannot be afforded compromise at the cost of delay in justice and aggravating nuisance of the human rights. But if this letter is already in the field, then the petitioner does not want elections.
मैं उसमें अर्ज कर देता हूं. If the Chief Justice or High Court, the others have also declined or not? Out of 5, the Islamabad High Court did not respond. जी. We wrote in September and October to all the others. The Peshawar High Court said कि go to that's the judicial policy. आप वहाँ से जाके clarification लें. They did not agree to accede to our request. Balochistan High Court initially agreed, but later on the learned registrar said कि no, we cannot provide. This was as near as the 2 weeks back. And Sindh High Court, just like Lahore High Court का एक और superseding letter है वो मैं अभी पढ़ता हूँ. They said कि नहीं जब आप election program issue करेंगे फिर हमें request भेजिएगा. तो इलेक्शन प्रोग्राम तो बिल्कुल एट द वर्ड्स आता है. हमने AROs और DROs की ट्रेनिंग तो पहले करनी है. वो तो पहले अच्छा नहीं तो फिर इसका मतलब है कि योर फर्स्ट चॉइस वाज जुडिशियल ऑफिसर बट द हाई कोर्ट्स डिड नॉट एग्री एंड फॉर वैलिड रीजंस बिकॉज़ यू नो यू hold election and the litigant then suffers and that 1.5 months there is also another aspect because you know I remember the elections when we did give judicial officers and this was I think when I was Chief Justice of Balochistan, then the allegations invariably, and you know, we also do judicial work, then the same matter may come before us in a judicial forum. Because election tribunals are also judicial officers. Yes. So it could be argued that, you know, this is a job, we have a clearly separation of powers of the executive, the judiciary, the legislature. We forget one important pillar, which is the election commission. But there, it's not a part of the executive, it's not a part of the judiciary, it's on its own. We are a federal institution, but our constitutional body on its own, not under any. Yes. So your choice was not the first choice was not you didn't appoint yourself. No, my lord. You asked the judiciary. We were constrained. And the judiciary basically this in Punjab there is a clear cut no. Clear cut no. उसके बाद in October then there was another letter. Then I'm just thinking, how can the learned judge suspend an order? He will issue a writ against the High Court. That's one of our grounds. No. Then the learned single judge has passed an order. The single judge. And he will direct what the Chief Justice to provide officers. When can a writ be issued against the High Court? So what sort of relief do they want? Or they don't want elections? Where is this where is this Mr. Niazi? I mean, if one person is going to hold Pakistan to ransom, I mean, he's just one individual, and he says, "I'm so and so." No other political party has come forward to challenge this. Political parties, the political parties are in the business of elections. So why would they want an election? And this one political party says, "I don't want elections," but it was the very same political party whose petition I decided. Yes, we have attached that 3rd of November's order along with this petition. So, but usme to the election, why didn't they say those things then? It was represented before us, if I remember correctly, by. Zafar. Yes, Mr. Zafar was representing Pakistan. There was no such demand or suggestion, and we kind of got the order. This appears to be, I don't know if it's bona fide petition or not. My lord, in fact, with due respect to the learned single judge, there's not even a single ground which says it's ultra-vires. Which provision is ultra-vires of? Where is my lord, the order starts at page 10. Let's read the operative part. Page 12, my lord. Page 12? At page 12, para 4. नहीं ये तो legally under challenge है. But what have they? These are the discussions. Can you read paragraph 7? My lord, then we go to the speaking part, which is para 7 and 8. नहीं 7 पढ़ें. जी 7. Keeping in view the importance of the legal interpretation of the constitutional provision having legal effect deeply connected to the raised national issue. Where is the constitution provisions? There's no constitution. There's no. The whole order is silent as to which. I don't know. Let's read it further. Having legal effect deeply connected to the raised national issue, office is directed to place this file before the Honorable Chief Justice for constitution of a larger bench. Page. But he is not passed in an order. My lord, these are the reasons. Para 5, 6, and 8 with क्या कहते? 8 is the suspension order. Notice. Meanwhile, the notification dated सारे के सारे 11
December 2023, issued by the Election Commission of Pakistan, appointing the DROs, ROs, assistant returning officers from executive shall remain suspended. Shall remain suspended. So there is a complete. One second, I fail to understand. If a judge is passing an order for constitution of a larger bench, then judicial propriety demands that he stays his hand. Yes. Now how can then he pass an order? Either he passes an order and doesn't say the matter be placed before the Chief Justice, then the Chief Justice has been given a fait accompli. You do what I ask you to do. In fact, either you request the Chief Justice of the Constitutional Larger Bench, or you don't make this request and you just proceed with the matter. Yes, my lord. So, has the Larger Bench been constituted? It has been constituted for Monday. Who is heading the Larger Bench? The very honorable judge. The same judge? The same judge. Two other judges. Five-member bench. This is very strange. What is the purpose of this petition? In fact, let's look it logically. My lord. Now, who have you appointed? Have you appointed people of some political party as ROs or DROs? No, my lord. Who have you appointed? These are a mix. एक पे चलते हैं ना. My lord. There are 4 notifications. जी. Let's take the first one. Notifications are at page 27. One at a time करें. My lord. It starts at page 27, my lord. The notification. This is for DROs. These are DROs. 11th of So December. notifications all across the country have been suspended? It's all across the In country. Sindh and Balochistan also? My lord, this notification is across the country. How many DROs in the country? कितने DROs appoint हुए? Per district, every district कितने हैं? Total कितने हैं सारे? 85. This is अच्छा ये पहला वाला देखिए. अच्छा I'm told it's 144. it gives a total number, my lord. ये इन्होंने शायद हिसाब लगा लिया. ये जरा कैलकुलेट कर लें कि DROs और AROs टोटल कितने हैं ऑल पाकिस्तान? Total is 148 DROs. नहीं टोटल AROs DROs ऑल ओवर पाकिस्तान कितना है टोटल फिगर? EROs is 148 148 और ROs कितने? AROs हैं ROs हैं? चलिए आप इनको हिसाब लगा के देखें, ऐसे बातें ना करें, कागज के टोटल टुकड़े फिगर दे देना हमें टोटल फिगर. गिन के बताइए. 859 ROs. अच्छा नहीं, हम जरा इनके नाम देखना चाहते हैं किसको आपने अपॉइंट किया है. My lord. ये रिटर्निंग ऑफिसर पेज 27 पे कौन है ये लोग? पेज 27 पे आपने पहला बताया ना ये. This is the reserved seat वाला notification. पढ़ तो देना कौन है DROs, किसके ये रिश्तेदार These are from our own offices. पढ़ देना, डेजिग्नेशंस पढ़ दे, नाम ना पढ़ें. Mohammed Freed, Additional Director General Elections 1, Election Commission of Pakistan. तो ये तो चैलेंज भी नहीं हुआ और सस्पेंड हो गया. ये तो सारे आपके अपने ये तो हमारे अपने हैं. हमने चैलेंज ही नहीं किया पिटिशनर. नहीं किया है. उसने तो खाली कहा था कि सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव्स There was a CM file, उसके अंदर कहा कि ये वाला भी इंक्लूड करें. Even though the virus is only तो challenge. फिर आप भी इलेक्शन ना कराएं, एग्जीक्यूटिव भी ना इलेक्शन कराएं, ऑफिसर भी ना इलेक्शन कराएं. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में समाअत जारी है. यहाँ वक्त ब्रेक का.